Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. With the hope and prayer about your well-being, we are starting the program today. I'm really excited and I'm really full of energy because today I have a person with us जिनके बारे में legendary नूर खान साहब ने बोला कि a day will come when you will speak and Pakistan will listen. ये 50 साल पहले की गई प्रेडिक्शन आज उन मेहमान के बारे में जो मेरे साथ प्लेटफॉर्म पे मौजूद हैं. He is known to be a COO of Hashu Education Group. And beside this professional introduction, the person with us who is going to share his wisdom with us today is an aviator, sportsman, and to the fact which is known to very few, he is also a musician. I'm talking about no one else other than Azam Jamil sahab. Assalamu alaikum, Azam bhai. Walaikum salam. All fine, sir. How are you, sir? Thank you very much for sharing your time, sir. आप अपने आप को comfortable audio और video के terms के अंदर. Yeah, just give me 1 second. I'm just trying to No problem. set this camera. Okay, now we're all set. No okay, problem. go. Sorry. No problem, sir. अच्छा मुझे आपके बारे में जो है थोड़ा बहुत I can claim कि मैं थोड़ा बहुत आपके बारे में जानता हूँ, but the viewers who have joined us for the first time and interacting with you, I would request you to share your brief introduction in terms of personal capacity and the professional experience you have, sir. Yeah, it's very simple. It's not complicated. एक तो my father was an oil company employee. There was a British oil company back in the 50s, 60s. So he joined that company, and I was born there. I'm the only child, so I grew up alone. I survived on my own. Alhamdulillah, went to reasonably good schools. My father sent me to H.S. College first and then on to Burnhall and then eventually landed up in the USA. So education, I was never a good student, okay, never. हमारे बोर्डिंग स्कूल में लाइंस जो बनती थी क्लासरूम्स में तो इट वाज बेस्ड ऑन योर लास्ट एग्जाम रिजल्ट. तो जो लड़का the guy who came first was standing in front of the line. The guy who came second was second, and so on. And my dream throughout my schooling was to remain in the first half of the line. तो और वो भी एक स्ट्रगल होती थी कि भी अगर 30 की क्लास है तो मैं पहले 15 में हो जाऊं, लेकिन that was a very very big struggle. खैर anyway, and वो ज़माने अच्छे थे. When I called my father and I said कि मेरे O levels का रिजल्ट आ गया है, so आजकल हम जो माँ बाप हैं वो पूछते हैं अच्छा कितने A's कितने B's. Our parents used to ask fail के pass. So and the minute you said pass, party was over. Mubarak hoy, and the phone went down. So those were less competitive times. So schooling or university यूं निकल गई. And then I was, in those days when I finished university, I was playing competitive tennis. And I wanted to play tennis for 2 or 3 years, but my mentors and the people who have put me where in a position why you are interviewing me today, they didn't want me just wasting my time. तो उन्होंने कान से पकड़ के नौकरी पे ले आए. तो नौकरी शुरू हो गई. And then joined hospitality, and I loved it so much that I stayed with hospitality for most of my life, other than a few years in between where I was the head of marketing for Berger Paints, and I worked with my father-in-law who was a very big industrialist for a while. So professional life ये गुजर गई, बाकी तुम्हारे सामने बैठा हूँ. अच्छा, दिलचस्प इंट्रोडक्शन है सर. मुझे ये बताइए कि जहाँ पे आप स्ट्रगल इन लाइफ की बात करते हैं, जहाँ पे आप कहते हैं कि मैं फर्स्ट हाफ ऑफ द क्यू में आने के लिए बड़ा स्ट्रगल कर रहा होता था और फिर पार्टी ऑन हो जाती थी पास या फेल का सुन के. स्ट्रगल इन लाइफ मीन्स दैट लाइफ हैज समथिंग एंड सम वैल्यू इन योर डेफिनेशन. इफ अलाउड, you tell me what life is basically, sir. Yeah, it is, I don't want to sound pessimistic, but it is a series of disappointments. It's a series of grief. It's a series of rejection.
and it's a series of failure. This is what life is. And it's got nothing to do with your financial position. You know, I don't have any money, and Bill Gates has billions of dollars, and I can promise you he has failed more times than I have. Hmm. Okay? He's been disappointed more times than I have been. He has faced rejection more than I have. Hmm. And so money has got nothing to do with the grief and the rejection and the disappointment that comes in your life. Hmm. This is a part and parcel of everybody's life, okay? Professional and domestic. And Hmm. I always tell people who listen to me and my students and people who I train that the ones who have succeeded in life are not brighter than you. They are not more intelligent than you. They were not standing in front of the line when the results were announced. These guys who have done well in life are the ones who have handled the disappointment well. These are the ones who've handled the rejection well. These are the ones who've handled the grief and the hurt well. तो जिन्होंने जिंदगी के बुरे टाइम अच्छे तरह हैंडल किए, कामयाबी उनके नाम लिखी हुई है. Hmm. So today, if you look at anybody that you think is successful, उसमें 100 खूबियां होंगी, but the one thing common you'll find in them is that they've all handled their downsides well. What we call adversity. You know, when adversity came into their life, they handled it very well, and hence the consequence was success. Those people who can't handle adversities, and you mentioned Noor Khan's name, and this is one thing the Air Marshal told me, and he said, I will check your character in adversity. Hmm. जब तुम्हारे पे मुश्किल वक्त गुजरेगा तो फिर मैं तुम्हें जज करूंगा कि तुम कितने पानी में हो. अच्छे वक्त में कौन शहजाद सर्वाइव नहीं कर सकता? अच्छे बॉस के साथ कौन काम नहीं कर सकता? अच्छी बीवी के साथ कौन पार्टी नहीं कर सकता? तो अच्छे अच्छा. टाइम को गुजारने में कोई नफलों का सवाब नहीं है. Hmm. आपका कैरेक्टर टेस्ट होता है. योर पर्सनैलिटी गेट्स टेस्टेड when things go wrong. Okay. And that is when this is how I judge people. My own children, I don't judge them when everything is fine in their life. I Hmm. judge them when things are going wrong in their life. And then I see how they behave. And then I check what their values are when things are bad. So this is the way I've looked at it, and this is the way my bosses looked at it. And the Air Marshal and all my bosses said, okay, when things go bad, that's the time we will have a look at you and see how you're performing. Okay. Because in Azam, good times, mhm. everybody can perform well. So that's my synopsis of life. Your synopsis of life. You have started your answer with words that you don't want to sound yourself as pessimism, and then again, yet you have shared I the can't hear words you that now, you. Shazad. Your audio's gone off. My audio has gone off. मैं थोड़ा सा ऊंचा बोल रहा I हूँ. क्या could मैं hear you, but audible now हूँ? I can't. You want me to log on again or something? Just give me 1 second. ओके, नो प्रॉब्लम, गो अहेड विद दैट. हम बात ये कर रहे हैं कि आज़म साहब कह रहे हैं कि उनकी नज़र में ज़िंदगी की क्या डेफिनेशन है और एडवर्सिटी के अंदर करैक्टर या किरदार की पुख्तगी जो है वो नज़र आती है. वी आर टॉकिंग विद आज़म जमील साहब, हु इज़ नोन टू बी COO ऑफ हाशु ग्रुप ऑफ हाशु एजुकेशन ग्रुप, एंड ही इज़ एन एविएटर, स्पोर्ट्समैन एंड म्यूजिशियन. और इनके बारे में एयर मार्शल, लेजेंडरी एयर मार्शल नूर खान साहब ने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी थी. वी आर गोइंग टू कनेक्ट with Azam sir once again. Azam sir, am I audible now? Yes, you are. Beach mein, you just go off, and I've noticed that if something like this happens, and if I log off and log on again, everything happens. And this is true with life also. When life is going wrong, just reboot it.
अच्छा, अब रीबूट तो करते हैं। यहाँ से ना हमारी डेविएशन भी स्टार्ट हो जाती है, मेरे माइंड फ्रेम की और आपके माइंड फ्रेम की। और मैं इसमें बड़ा ब्लंटली कहता हूँ कि आई एम एन एम्बेसडर ऑफ माय व्यूअर्स, सो डोंट थिंक मी ऑफ माय ओन थिंकिंग प्रोसेस, बट दिस इज द प्रोसेस ऑफ ऑल द ऑडियंस एंड लिसनर्स टू फॉर ऑफ आवर शो टुडे। मुझे ये बताइए कि आज आपने कहा कि रिजेक्शन, डिसअपॉइंटमेंट्स and failures, this is the combination and blend of all these things is the meaning of life for you. Where does that success, joy, happiness, optimism goes? वो कहाँ है? नहीं, वो कहीं नहीं जाती. It's always there. Uh, Hmm. your when you are when you enter life, Hmm. you are given a basket of joy and happiness and success, and you are given a basket of grief and sorrow and pain. Okay, Hmm. what I was trying to explain to you is that joy, the basket of joy and pain and joy and success and happiness, that starts depleting if you don't handle the other basket well. Okay, You I see what I'm understand saying? it. So you have your share. There's no life which doesn't has only pain. There's no life in the world that has only joy. We all come with a combination. The problem is that if we don't handle the grief and the sorrow well, then this basket of happiness starts depleting. And very soon you'll find it empty. And you'll Hmm. find it empty not because और फिर ये बदनसीबी नहीं है, ये उस पे मत डाल देना. This was your call. You made bad choices. And Okay. because of your bad choices, this basket got empty and empty and empty because you didn't handle the other basket well. That was my I point. Okay, sir. Beautifully quoted, and I now understand the concept clearly. लेकिन इसके ऊपर आने से पहले एंड फर्दर डिबेट करने से पहले एक तरफ और चलते हैं, जहाँ पे आपने कहा कि एडवर्सिटी को आई विल चेक योर कैरेक्टर इन एडवर्सिटी, राइट? सो एडवर्सिटी वैल्यूज अ लॉट। मुझे ये बताइए कि एडवर्सिटी, वो जो लड़का पहली क्यू में पहले नंबर पे आता था 30 में से, वो अगर 14वें नंबर पे आता है तो क्या ये उसके लिए एडवर्सिटी है? हालांकि उसी 14वें नंबर पे आजम साहब 30वें से अगर आते हैं तो उनके लिए सक्सेस है। व्हाट डू यू मीन बाय एडवर्सिटी इन द रियल सेंस? देखो, एडवर्सिटी, देखो जिस तरह हमारे मेरे जैसे ट्रेनर्स हैं ना, आ, हर चीज को मुश्किल कर दिया. मेरी मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आई मेक थिंग्स वेरी सिंपल, राइट? नाउ don't forget that the more complicated you make things, the more people get impressed with you. And the more simple you make things, people say, इसको क्या आता है, इसको तो कुछ नहीं आता, ये तो वो बात कर रहा है जो मुझे समझ आ रही है. लेकिन मैं कोई तुम्हें इस टाइम पे कोई एक्सेल का चार्ट बता दूं और मैं तुम्हें कोई बेल कर्व बना के सुना दूं, तो everybody will say wow, you know. Fundamentally understand that life is a very simple process. ठीक है? Adversity only means difficult times as you perceive them. Okay? ओके। मैं ये मजाक करता हूँ. I was once teaching in a multinational organization and these were all director level people. Okay? And it was a 2-day program. And I will not mention the name of the multinational corporation. It's one of the largest in the world. Okay? When I finished my 2 days of session, I said, if there are any questions, I'll be happy to answer them. And of course, different questions came. So one person got up and started praising me. कि जी ये जो 2 दिन गुजरे हैं ना, सुभान अल्लाह, हमने तो कभी ऐसी चीज ना सुनी और सुनी. And he kept praising me, and I was wondering, where's the question? What is this praise leading to? And when somebody praises me too much, I start getting very worried, okay? Because I know that after this praise, एक मुंह पे थप्पड़ आने वाला है. Because when people start their sentence with due respect, be sure that that respect is going. It's no longer there. ओके। You know, so whenever somebody says, sir, with due respect, मतलब है कि थप्पड़ आने वाला. Okay? So ठीक। समझ गए ना? So I was wondering कि what is he leading to? And eventually the question came. Because in my introduction, he found out that I was a pilot and a musician.
And he said, sir, itne aap bade danishwar hai, although I want to place on record that I'm not, but this is the way he described me. And he said, मुझे ये बताएं कि ये मरासियों वाला काम क्यों शुरू कर दिया? Oh That my was God. his question. Okay. Okay. Now, there were about 20 directors of this company sitting in their room, and the other 19 just froze. They couldn't believe that one of their colleagues had asked this question. Okay. And they were embarrassed, and and they were looking at me कि अब I'll walk out या मैं नाराज हो जाऊंगा. So, and I had 2 seconds to make a choice. Because when somebody says this to you, you can't say, अच्छा मैं कल जवाब दूंगा. So I said, you are disappointed in me because you think कि एक दानिश्वर बरासी बन गया. What if I was a जद्दी पुश्ती मरासी और मैं दानिश्वर बन गया हूं? Is that better? Will you be impressed now? I said, if I'm a Marasi and I've become a Danishwar, you'll be very happy about it, right? But the reverse is disappointing for you. So adversity, coming back to your question, is what you as a person, everybody has his own benchmark of adversity. And you gave a very good example of my class. मैं शहजाद 15 से 14 आता था ना, तो मैं जश्न था, और जो लड़का फर्स्ट से सेकंड आ गया उसके घर मातम होता था. Yeah, exactly. You see? Yeah. So his concept of adversity was totally different. And my concept of adversity, and this is true because we are all human beings, we react differently. But if you want to simplify adversity, it simply means the difficult times that will come in your life. Okay? The difficult times will come in your job. They'll come in your relationships. They'll come with your family. They'll come with your children. They'll come with every aspect. Because I was a sportsman, I have lost 10 times more matches than I have won. So you had to deal with the disappointment there. I was a musician, so I played music. तो कभी कभी तालियां बजती थी, कभी कभी गालियां बजती थी. So I had to, so you can't say कि जी I'm going to play a song and everybody has to clap, because अब मुझे ये बड़ी अजीब बात लगती है when compeers announce and say आपकी तालियों में आते हैं. क्यों भाई तालियों में क्यों आते हैं? Why are you forcing anybody to clap? Clap is a sentiment of appreciation. If they feel good about it, they will clap. Who are you to tell the audience कि जी आप तालियां बजाएंगे तो ये बंदा एंटर करेगा? क्यों भाई, वो मामा लगता है तुम्हारा? अच्छा, ठीक है. You understand? So I understand. So adversity is not complicated. It is the bad times in your life, and it varies. Okay? It varies. कई लोगों को ठंडा फुल्का मिल जाए तो एडवर्सिटी है. ठीक है? मुझे ठंडा फुल्का क्या, मुझे फुल्का ना दो, मैं कच्ची डबरोटी से सालन खा लूंगा. I am as happy, right? So two people react differently to the same problem. जिस तरह hospitality में मैं अगर 2 identical cup of coffee बना के शहजाद, if I give you one and if I give another person the same cup of coffee, you may like it and he may hate it. It's the same cup of coffee. It has the identical recipe, but you may love it and he may hate it. You are not right or wrong, neither is he. You liked the taste of that coffee, he didn't like it. And this is what life is. Somebody likes something, somebody doesn't like it. So adversity ko complicate nahi karna. Excuse me. It is simply the difficult times in your life. That's it. That's all. okay.
Okay, that's okay. For the Yeah. viewers who have joined our program late, we are talking about life and adversity, and we have Honorable Azam Jamil sir with us, who has told us that he has started his life where his father was working in an oil company. He's the only child to the family, good schools, and got the good education from good institutions. Never was a good student. Never. Never was a good student, and स्कूल और यूनिवर्सिटी ख़त्म करने के बाद ही स्टार्टेड प्लेइंग टेनिस और वहाँ से फिर कुछ मेंटोर से पकड़ा और जॉब के अंदर डाल दिया जॉब एरेना के अंदर he has worked in hospitality industry and for quite brief time he had been marketing head for buyer and then फिर आदम ने बताया कि what life really means and without sounding himself pessimist he told us that it's a blend of rejection disappointment and all that stuff फिर हमने अभी एडवर्सिटी को क्लोज किया है जहाँ पे हमने कहा कि इट इज सिंपली द डिफिकल्ट टाइम्स इन योर लाइफ इन द मीन टाइम आजम भाई हमें ज्वाइन किया है मोहम्मद सजवानी साहब ने एंड ही सेज दैट गुड टू सी आजम जमील आफ्टर अ वाइल एंड रिजवान अशरफ साहब आपको सलाम कर रहे हैं उस्मान अजीज साहब से शहजाद great to see Azam Saab in discussion with you. So people have joined us and they're commenting about your presence here on the program. Great discussion going on. Really enjoying Azam Saab sharing his experiences. Really like it. Azam भाई मुझे अब आपसे ये पूछना है कि आप ये कहते हैं कि मैं pessimist sound नहीं करना चाहता. Yet you have coined few of the terms जो कि आप audience या recipient के viewpoint से देखें तो उसमें कोई रिजॉयस कोई हैप्पीनेस कोई सक्सेस का एलिमेंट शायद नजर ना आए मैं आपके एक प्रोग्राम में देख रहा था जहाँ पे यू आर टॉकिंग अबाउट लाइट एट द एंड ऑफ द टनल जहाँ पे पेंडेमिक के हवाले से बात हो रही थी कि द ओनली सर्वाइवर्स जो भी सर्वाइवर्स इस फेज से गुजर के निकलेंगे वो होंगे जो कि चेंज को बहुत अच्छी तरह से अडेप्ट कर लेते हैं एंड जो चेंज को अच्छी तरह से अडेप्ट कर लेता है वही एक्सेलेंस इन द लाइफ को अचीव कर पाता है तो सबसे पहले तो एक बेसिक क्वेश्चन को सॉर्ट कर लेते हैं ताकि हम गुफ्तगू को आगे थोड़ा सा अनरैप कर सकें यू ब्रीफली टच अपॉन व्हाट एक्सेलेंस इन द लाइफ रियली मींस Okay. Before I do that, I need to make a correction. I was not director marketing for Bayer. I was director marketing for Berger Paints. Okay. So, Sorry. so now the other thing is that Mohammed Sajwani is here. MS and I were colleagues. We have worked together. Wonderful chap he is, and we've shared a lot of good times together. So I'm glad he's watching. Okay. So your question was what was your question? What is what? Making things simple, my simple question is what excellence in life really means in your dictionary? Job description plus one. Okay. Okay, so here's what excellence is. If you are working in a company, you have a job description, right? Okay? You are required to do 10 things. Okay? Now, people mistake excellence as an extended part of good. कि जब आप good से आगे चले जाएंगे तो आप excellence में आ जाएंगे. Excellence has got nothing to do with good. If you keep working better and better and better, you'll become very good. But it's not the definition of excellence. Okay? It is not कि जी 80 to 90% good है और 90 से 95 excellent है. So understand that excellence is, and I'm going to say this very slowly, is that whatever you do that adds value to other people, that is not a part of your job description. Okay, and job description, आपकी घर में भी एक job description है. आपकी दोस्तों के साथ भी एक जॉब डिस्क्रिप्शन है You have a job description with your children. So let me give you an example of what I'm saying, right? When I used to be a trainer for one of the leading banks in Pakistan, I used to visit their branches just to see how they're doing. And they didn't know who I was, but I would just used to sit there and I used to take a token and I just used to wait for the interaction. Okay? And I saw an old man coming into the office of the manager, right? And he spoke with the manager, and the manager was very nice and polite. And after about 5 minutes, the old man got up
and he walked out of the branch. Nothing wrong with that. In another branch, I saw an old man coming in. Again, the same thing happened, right? And then the branch manager got up and went out with him and left him to the car. Okay. Okay? Now, leaving a customer to the car is not a part of your job description. Hmm. It will, Habib Bank or UBL or National Bank does not require its managers to do that. Hmm. But if you do something that is not a part of your job description and you add value to the service for those 2 minutes that manager was going outside, for those 2 minutes he had stepped into excellence. Hmm. समझ गया? तो जो चीज आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है करने की, वो चीज जब आप करते हो तो वो एक्सीलेंस में आ जाती है. It is that little bit extra that you do, that you are not required to do. It's a very simple concept. It's not complicated. Excellence is not working 14 hours a day. Excellence is not कि जी सारा कुछ छोड़ के तो मेहनत मेहनत मेहनत. उसके अपने फायदे हैं. Excellence is simply this, that today my wife expects कि ये मेरा जो खामंद है ये 10 काम करेगा. That's her expectation. जब मैं 11वां काम करूंगा ना शहजाद तो मैं एक्सीलेंट हो जाऊंगा. ठीक है. समझ गए ना? ठीक है. JD+1. JD+1 ये एक्सीलेंस है. और वो वन क्या है? वो वन comes from your heart. That one doesn't come because you'll get more money. That one doesn't become because तुम्हें bonus मिलेगा. That one becomes because your heart drives you to do that. That's excellence. अच्छा आजम भाई, आपकी बहुत सी गुफ्तगू के अंदर ना मुझे एक रिफ्लेक्शन आती है. इफ यू अलाउ मी टू शेयर विद यू, हम्बली अलाउ मी. मुझे ये रिफ्लेक्शन आती है बॉस के, शायद एक ना उम्मीदी है नौजवानों से कि तुम ये नहीं करते हो, तुम ये नहीं करते हो. फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. हमने कहा कि जब कल्चर सोसाइटी चेंज नहीं होते तो नेचर जो है उन्हें फोर्सफुली चेंज कर देती है, और एवरीथिंग इज गोइंग टू चेंज विद दिस पेंडेमिक एंड ऑल दैट थिंग. और सर्वाइवर से वो होंगे जो कि चेंज को एम्ब्रेस करते हैं. मुझे ये बताइए कि इसमें पॉजिटिविटी क्यों नहीं हो सकती कि हम सारी सर्वाइव कर जाएंगे, हम सारी चेंज को एम्ब्रेस कर सकते हैं. अच्छा, अब इसको सिंपल कर देते हैं इस क्वेश्चन को. मैं आजम साहब से ये पूछता हूँ कि शहजाद को ये बताएं कि शहजाद हैज ऑल द इंटेंशंस to become the survivor of this phase of pandemic. What change do you want me to embrace in order to become the successful change adapter? The first thing is that do not use the word survive. Okay. इसमें तुम्हारा कोई कमाल नहीं है. ये अल्लाह ताला का काम है. तुम्हारा काम है thrive. ठीक है. This is what you have to do. सर्वाइव करना कौन से तीर मारोगे यार? भूखे मर जाएंगे. एक पेंडेमिक क्या 100 पेंडेमिक ले आओ यार, क्या कर लेगा हमारा? सर्वाइवल पे कौन सी जश्न मना रहे हो? द क्वेश्चन इज थ्राइव. आर यू थ्राइविंग आफ्टर द पेंडेमिक? So the question is, if I lost a very important tennis match, did I emerge as a better tennis player, or I said कोई बात नहीं, मैं टेनिस को नहीं छोड़ता, मैं और खेलता हूं? सर्वाइवल में कोई कमाल नहीं है. सर्वाइवल तो अल्लाह ताला ने हमें बनाया है. शहजाद, हम अपनी औलाद को दफना के 2 दिन के बाद ठीक हो जाते हैं, सर्वाइव कर जाते हैं. अपनी औलाद को लूज करने से कोई बड़ा, अभी जो आपकी औलाद है आप समझते हो कि ये अगर चला गया मेरा सांस बंद हो जाएगा. लेकिन इन रियल लाइफ व्हाट हैपेंस? यू bury your own children and God gives you courage to start your life again. तो सर्वाइवल पे प्लीज कोई खुश ना हो. मेरा चैलेंज थ्राइव करने का. यू हैव टू थ्राइव. ठीक है. योर सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन वाज कि मैं यूथ्स की नाउमीद क्यों हूं. मैं नाउमीद नहीं हूं, मैं इनको डांट रहा हूं. मेरा काम है. इफ ये मैं क्या करूं? वही काम कर दूं जो तुम कह रहे थे कि तालियां बजा दे. आपकी भरपूर तालियों में तशरीफ लाते हैं मोइन अख्तर.
और भाई मोइन अख्तर अपनी तालियां खुद बजवा लेगा, उसमें ठीक। इतना टैलेंट है, उसमें इतना टैलेंट है, वो 2 मिनट बात करेगा, पूरा हॉल तालियां बजाएगा, तुम्हें उसका वकील बनने की जरूरत नहीं है। हम्म। मेरा मैं हर यूनिवर्सिटी में, हर इदारे में जाके मैं यूथ को ये भी कह सकता हूं कि वाह 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 तुमने कमाल कर दिया, तो वो मेरे से खुशी होंगे ना, कहेंगे यार देखो आजम जमील आया था, हमारी तारीफ कर गया, आजम जमील ने झूठ नहीं बोलना। और हम्म। मैं कई इदारों पे जाके पहले ही ये कह देता हूं, बिफोर आई स्टार्ट माय ट्रेनिंग, कि आज बेइज्जती प्रोग्राम है, तैयार हो जाओ। ठीक। ठीक है। और मैं कहता हूं कि मेरी अगर शक्ल पसंद नहीं है ना, तो बाहर जो गार्ड खड़ा है उसको मेरी तस्वीर दे दो कि आइंदा इस आदमी को इस इदारे में घुसना ना घुसने दे, दैट वो मुझे मंजूर है। लेकिन हमारी देखो, हमारी यूथ की जहां हंड्रेड्स ऑफ स्ट्रेंथ्स हैं, हम्म। वहां उनकी हंड्रेड्स ऑफ वीकनेसेस हैं। तुम मुझे बताओ कि मेरा क्या रोल है, मैं उनकी वीकनेसेस खत्म करूं या उनकी स्ट्रेंथ्स पे ताड़ियां बजाऊं? हम्म। मेरा ओके। काम उन मेरा काम है उनकी वीकनेसेस को हाईलाइट करना, बिकॉज इफ यू हैव लिसन टू माय वीडियोस, यू विल आल्सो लर्न दैट वन वीकनेस कैन टेक डाउन 10 स्ट्रेंथ्स। ओके। अगर तुम्हारे पास एक वीकनेस है और तुमने उसको ठीक नहीं की, तुम्हारी 10 खूबियों को वो लेके डूबेगी। सो दैट्स माय कॉन्सेप्ट। मैं ना, मेरे से ज्यादा पुरुमीद बंदा तो है ही कोई नहीं पाकिस्तान में। मैं तो कहता हूं ना उम्मीदी गुनाह है, बट पुर उम्मीदी का मतलब खुशामद नहीं है। बिल्कुल ठीक हो गया सर। हाँ, जी। अच्छा, हम नेक्स्ट आगे थोड़ा क्वेश्चन। प्रोग्रेसिव चलते हैं। से शहरबानो पिताफी साहिबा कहती हैं, रियली एंजॉइंग द डिस्कशन। थैंक यू शहरबानो फॉर अप्रिसिएशन ऑफ द डिस्कशन। आजम भाई, ये जो आप ना उम्मीदी और वीकनेस स्ट्रेंथ की बात कर रहे थे, आई स्टिल रिमेंबर वो एग्जांपल के लोगों से पूछा कि सबसे बड़ी वीकनेस कौन सी है, पेपर पे लिख लो, मुझे नहीं बताओ। और फिर आपने कहा कि 3 साल पहले, और फिर आपने ये भी कहा कि मैं तो बड़ा कटियस हूँ कि मैं 3 साल कह रहा हूँ, 6 साल पहले भी देख लो तो इट स्टिल एग्जिस्ट देयर, तो तुमने क्यों नहीं ठीक की? So we have the concept of what mind frame and what thought process we have. आप ये बात करते हैं कि जब ऑप्टिमिज्म की बात करें तो हम ये कहते हैं कि पेंडेमिक जो है इट इज़ गोइंग टू गेट ओवर एंड ऑल द थिंग्स विल बी ब्राइटर देन बिफोर, और तमाम की तमाम चीज़ें जो पॉजिटिव हो जाएंगी, थ्राइव करने वाला इन्वायरमेंट होगा, एंड यू शुड सी द लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, and this is the viewpoint you usually share on the platforms. मुझे ये बताइए कि अगर मैं एक यंग यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट हूँ, मैं एक यंग स्टार्टअप हूँ, मैं एक बिजनेसमैन हूँ जिसका मैं बिल्कुल फाइनेंस जो है वो क्रश हो गया है, और एक ऐसा बंदा है जो कि इन अनसर्टेन टाइम्स इससे स्टीयर करने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं बचा, तो when I have all the economies and all the finance sheets collapsed and gone, which light at the end of the tunnel you are talking about? If it still exists there, what fun it is having for me when I will not be there to enjoy it? How to do एब्सोल्युटली। that? एंड नो, फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर इस सवाल का जवाब मेरे पास होता ना शहजाद, आई वुड हैव बीन द रिचेस्ट पर्सन ऑन द प्लेनेट। ठीक है, बेजोस और बिल गेट्स मेरे मुलाजिम होते। देखिए, लाइट एट द एंड ऑफ द टनल डज नॉट मीन सक्सेस फॉर एवरीबॉडी। रिमूव पेंडेमिक को भूल जाओ, लेट्स से द पेंडेमिक didn't come. Okay, let's assume the pandemic never happened. तो फेलियर्स नहीं थे, फाइनेंशियल स्ट्रगल नहीं था, लोग खुदकुशियां नहीं कर रहे थे। पेंडेमिक डज नॉट मीन कि आपकी हर चीज खराब हो गई है, और नॉन पेंडेमिक एनवायरनमेंट डजंट मीन दैट एवरीथिंग वाज ओके बिफोर Yeah. द पेंडेमिक। द प्रॉब्लम्स दैट यू हैव हाईलाइटेड इन दिस क्वेश्चन, you tell me, is pandemic responsible for these problems? Did they not exist before the pandemic? Did you not see startup failures? Did you not see business failures? Did you not see people going nuts? So who could they blame it on then? अब तो एक बहाना मिल गया ना भाई, तब कौन सा बहाना था? So first of all, pandemic या कोई भी एडवर्सिटी हो,
देखो, आपका पेंडेमिक 5 महीने चला है हम्म, एंड आज अनाउंसमेंट्स हो गई है कि जी सब कुछ खुल रहा है. सेकेंड वर्ल्ड वॉर 5 साल चली थी and people pulled out of that. हम्म, And the two nations that lost the war won the peace. Which were the two nations who lost the war? Japan and Germany. And today they lead the world's economies, both these countries, right? हम्म. So the question is कि आप 5 साल की एक जंग हार के, when everything is destroyed, and you emerge as one of the world's leading economies, so somebody must have done something right, no? Yeah. Exactly. Now, the only bright side I look at the pandemic is not कि जी पेंडेमिक के बाद आप कोई जादू की छड़ी घुमाएंगे and you'll be okay. My bright side of the pandemic, and I'm on record, is that the pandemic has forced you to change Hmm. because we as a nation are generally allergic to change. We don't like changing. What's wrong with PIA? What's wrong with Pakistan Steel Mills? What's wrong with PTDC? These are 1970 corporations trying to survive in 2020. They are designed in 1970. Because they haven't changed, they will struggle. मतलब है नफा नुकसान हर कंपनी में होता है, but they are structured in the 1970 mindset. PIA was brilliant in 1970. Why? Because it was the 70s airline surviving in 70s. You Okay. bring Air Marshal Noor Khan today to run PIA, he will fail because he can't run a 70s airline in 2020. Okay, You I need a understand. 2020 airline. You see what I'm saying? So Yeah. pandemic pandemic should pandemic should change us. Hmm. And change, sometimes a change is very comfortable to achieve and acquire, and sometimes a change is very difficult to acquire. ठीक है? Okay. तो बिल्कुल ठीक तो है. तो चेंज करना आसान नहीं है. मैं अपने घर में जो मेरे ड्राइंग रूम में एक लैंप पड़ा हुआ है, मैं उसको नहीं चेंज कर सकता. I अच्छा. can't change the location of that lamp without a crisis coming in the house, right? So, Hmm. because we get into our comfort zones, right? But post-pandemic existence will be difficult, okay? Where two things will go down, two opportunities will come up. Hmm. Those two will go down. You can't prevent those two from going down. But the ones that are coming up, the youth needs to get a hold of those. ठीक है? Excellent. So that's my point. Excellent, excellent. Now I understand it. कि natural surge for need of happiness will come there. Semi-depressive state के अंदर हम इस वक्त सब लोग हैं और this is going to end and few of the opportunities are going to die away. Natural death होगी and at the same time to replace that vacuum, few of the other opportunities are going to come up, surge करेंगी, emerge करेंगी and the youth has to understand this phenomena. मुझे ये बताइए कि इस गुफ्तगू के दौरान आपने कहा कि जॉब मार्केट भी जो है वो श्रिंक हो रही होगी. इन द मीन टाइम सरफराज सादिक साहब है ज्वाइंड अस एंड कह रहे हैं कि ट्रू पेंडेमिक एक्सपोजेस द वीकनेसेस. थैंक यू वेरी मच सरफराज फॉर एंडोर्सिंग द स्टेटमेंट. आजम साहब आपने कहा कि जॉब मार्केट जो श्रिंक हो रही हैं, स्क्वीज हो रही हैं एंड थिंग्स आर गोइंग बैड इन दैट एरिना एज वेल. मुझे ये बताइए वन ऑफ योर टॉक्स आपने कहा कि बहुत से लोग जो हैं उनको फ्लश आउट कर दिया गया एंड इफ गिवन अ चांस टू you will be the first person to ask their availability when the things get normal again and Absolutely. you recall that thing. मेरा क्वेश्चन आपसे ये है सर कि जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, I have also served in countries best employers for the last 20 years or so. मेरे पास भी 2 decades का एक्सपीरियंस है जो कि आपसे बहुत कम है, बट स्टिल आई थिंक दैट देयर इज अ पॉइंट जहाँ पे आप जैसी टॉप मैनेजमेंट इफ अलाउड. मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि व्हाई आजम जमील डिड नॉट गेट exit from the organization. Why only middle management and base foundation level officers get out of the organization whenever this hard time comes in the organizations?
एक आजम जमील साहब को अगर आप रेस्ट करवाते हैं ऑर्गेनाइजेशन से तो 10-12 लाख 15 लाख का जो बचत होती है उसके अगेंस्ट में 50 बंदा बच जाता है सर. हाउ डू यू टेक इट? Very good question. Very good question. You want to listen to the answer? या प्लीज सर. Azam Jamil has been working without a dime of pay for 3 months. And we voluntarily gave up, all senior management gave up their pay so that the junior management should not lose their jobs. I have not been paid for 3 months. I had to sell my car. मेरे पास बार होंडा अकॉर्ड खड़ी थी, मैंने अपने घर का किचन चलाने के लिए वो गाड़ी बेची है. आई फील नो शेम in admitting this on live television and this live show. Today I have one car less and my kids and my wife was upset. मैंने कहा you tell me, I have to provide for you. It is my responsibility for as long as Allah keeps me breathing. मैंने प्रोवाइड करना है. मुझे तुम बताओ कि मैं कहां से प्रोवाइड करूं, मैं कौन सा जमीन का प्लॉट बेचूं, मेरे पास कोई नहीं है, मैं कौन सा घर बेचूं, मैं किराए के घर में रहता हूं. So I sold my car to survive, right? But so everybody, but even whatever steps you take, Shazad, हर स्टेप की भी एक लिमिटेशन है ना. ठीक है. मेरी तनख्वाह मैंने 4 की हुई है और बहुत सारे मेरे कॉलीग्स आर नॉट गेटिंग पेड, नॉट 1 रुपी. लेकिन इवन दैट हैज अ लिमिट ना. अब अगर उस लिमिट के अंदर अगर पेंडेमिक खत्म हो जाता है और हम सर्वाइव कर जाते हैं, तो अगर ये सर्वाइव कर गए तो वेरी नाइस. बट व्हाट इफ द पेंडेमिक लास्ट 6 more months? आई कैन प्रॉमिस यू आजम जमील विल नॉट बी एम्प्लॉयड इन 6 months. मैं तुम्हें लिख के देता हूं कि मैं फारग हो जाऊंगा. ऑब्वियसली मैंने फारग होना है भाई. जब सब कुछ बंद है तो इवन विदाउट पे मैं फारग हो जाऊंगा. सो पेंडेमिक और इस किस्म का बुरा वक्त जो है ना, उसकी जो मियाद है, द टाइम पीरियड, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ लॉन्ग इट इज. बिकॉज फर्स्ट मंथ इन पेंडेमिक व्हाट हैपेंड? नोबडी डिड एनीथिंग. Everybody was normal, even when you were working from home. Next month was slightly worse than the first month. The third month was worse than the second month. And that's how it goes, right? And people need to understand that a profitable company doesn't mean the company has cash. ये याद रखना. Okay. और ठीक है, a company could be profitable. It doesn't mean it has cash in hand. And salaries and everything has to be paid from cash. It can't be paid out of the balance sheet. So, and also I want to tell everybody who's listening, it is very unfortunate that people have been laid off in every company worldwide. दुनिया में layoffs हुए. Please एक चीज याद रखें कि ये एक ऐसा अमल है जो किसी को पसंद नहीं है. Nobody likes doing this. Yeah. Nobody likes. और मेरा तो दिल इतना कमजोर है, मैं तो कभी खुशी कभी गम देखता हूं तो रो पड़ता हूं. इतना शाहरुख खान नहीं रोता जितना मैं रोता हूं. Can you imagine me trying to get rid of somebody? मेरा तो I am a very very weak person. I am a very soft hearted. मेरे से ये काम नहीं होते. तो ये एक anybody who's even let one person go, चाहे वो चपड़ासी हो, चाहे वो जनरल मैनेजर हो, it is a very heart-breaking exercise to do. I refuse to believe that कोई भी इदारा इस अमल से खुश हुआ है और उन्होंने कहा जान छुट्टी, दफा करो इनको, मारो इनको लात. This does not happen. Okay, I understand, and I really respect your insight sharing. I really respect that thing. और आपकी जो भी अल्लाह ताला आपको इसका अजर देगा. No, coming to some lighter part of the discussion, sir. थोड़ा सा इस सब्जेक्ट से हट के भी मुझे ये बताइए कि आप टेनिस के रहे प्लेयर रहे, एंड आई वाज रीडिंग कि आप एक एविएटर भी थे, एविएशन से भी आपका ताल्लुक रहा. इन दोनों चीज़ों को ब्रीफली टच अपॉन कीजिए ज़रा, फिर आई एम गोइंग टू गो इनटू अनदर एरिना ऑफ योर पर्सनल लाइफ, सर. बेटा क्या टच करना है? टेनिस आई स्टार्टेड प्लेइंग व्हेन आई वाज वेरी यंग. I was 9 when I started playing tennis, and I became Pakistan's national
a doubles champion when I was 23. So it Okay. was a 14-year journey. Okay. और ये 14-year जर्नी ऐसे थी कि तुम्हारी सोच है, इतने छितर पड़े, इतनी डिसअपॉइंटमेंट, इतनी मुसीबतें, इतने सैक्रिफाइसेस। सुबह फजर पे उठ के बताओ ना मुझे, भागना शुरू करो ना बार माल रोड पे, मैं देखता हूं कितने पानी में हो। कहना आसान है। When you are 14 years old and you are waking up at 4 o'clock in the morning and you are running for 2 hours and then you come back and you wear your school uniform and then you have to go to school, ये सोच है। आज कितने तुम्हारे कोई बहन भाई या नेफ्यूज या हैं जिनके बच्चे ये करते हैं? बिकॉज इसके लिए बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। देखें, लोगों को वो इमरान की तस्वीर अच्छी लगती है जो उसने वर्ल्ड कप उठाया हुआ है, और मैं उनको यही कहता हूं, मैं कहता हूं इस तस्वीर के पीछे जो रगड़ा है उसकी कभी तस्वीर देखी है? जो Hmm. इसकी तस्वीर के पीछे मेहनत है, जो इस बंदे ने किसी पार्टी पे नहीं आता था, किसी बर्थडे पार्टी पे नहीं आता था, कोई हम सब शुगल कर रहे होते थे, ये अपनी बॉलिंग करवा रहा होता था, ये सैक्रिफाइस होती है। आजकल की हमारी यूथ का क्या इशू है कि सैक्रिफाइस के लिए तैयार नहीं है। दे वांट टू पिक द वर्ल्ड कप। I that understand. desire is that so flying flying मेरी बाय एक्सीडेंट शुरू हुई। फ्लाइंग बाय एक्सीडेंट यही शुरू हुई कि मैं 61st जीडीपी में सिलेक्ट हो गया। एयरफोर्स में मैंने अप्लाई किया, और 61st जीडीपी में जब मैं सिलेक्ट हुआ तो 71 की वॉर खत्म हुई हुई थी। अब 71 की वॉर में शहजाद, तुम इमेजिन करो कि हर घर में जनाजा था, हर घर में फौतगी थी, Hmm. और Hmm. यहां पर वालिद साहब का अकलौती औलाद Oh. एयरफोर्स में, उनका तो सांस रुक गया। तो उन्होंने मुझे कहा कि ये क्या है? मैंने कहा मैंने आपसे पूछ के अप्लाई किया था। तो Hmm. आगे से कहते हैं मुझे क्या पता था तुमने सिलेक्ट हो जाना है। तो Okay. अच्छा, अब वो वालिद तो वालिद होता है ना। उस टाइम के चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर मार्शल रहीम खान डैडी के बेस्ट बडी थे। तो रहीम खान को डैडी ने फोन किया और कहा कि वो तो आजम तो 61st जीडीपी में सिलेक्ट हो गया। तो रहीम खान ने कहा मुबारक हो। उसने कहा तेरा बेड़ा गर्क हो, मैं किसी और काम के लिए फोन कर रहा हूं। उसने कहा मैं क्या करूं? उसने कहा यू रिमूव हिज नेम फ्रॉम दैट लिस्ट। Hmm. एंड एज चीफ ऑफ द एयर स्टाफ एयर मार्शल रहीम खान सेड, जमील आई एम नॉट अलाउड टू, आई डोंट हैव द अथॉरिटी। एक दफा वो लड़का सिलेक्ट हो गया एज एयरफोर्स चीफ, आई कैन नॉट रिमूव हिम अनलेस ही गिव्स हिज पर्सनल अप्रूवल टू मी। तो Okay. माय फादर सेड कमाल है, वो यार वो उसकी 18-19 साल उम्र है और तुम एयर चीफ हो और तुम उसकी इजाजत मांग रहे हो। कहते हैं ये कानून है, आई कांट ब्रेक इट। सो द नेक्स्ट मॉर्निंग आई गॉट अ कॉल फ्रॉम द एयर चीफ। अच्छा, मुझे क्या पता था कि मुझे क्यों कॉल करें? मैंने समझा, मैंने कहा यार ये एयरफोर्स कितना अच्छा इदारा है कि जो बच्चे सिलेक्ट हो गए एयर चीफ सबको पर्सनली कॉल करके वेलकम करता है। Okay. मैंने तो यही समझा। तो अब मुझे समझ ना आए कि मैं अंकल का हूं या मैं सर का हूं, बिकॉज मैं तो टेक्निकली अपने आप को एयरफोर्स का पायलट समझना शुरू हो गया। तो खैर मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम सर। कहते वालेकुम सलाम, मुबारक हो। मैंने कहा जी थैंक यू सो मच। देन ही सेड योर फादर कॉल्ड मी। I said, he called you? So he says, you know why he called me? I said, no. कहते he wants me to remove your name from the Air Force. तो मेरा तो सांस बंद हो गया। तो मैंने कहा कि sir, what did you say? So he says, I said exactly the same thing to him that I'm going to say to you, that I will not remove it unless you allow me to. So I said, Hmm. जी के what do you advise me? So he said कि देखो, I am now advising you as your father's friend. तुम्हें एयरफोर्स ज्वाइन करने में दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। बट द डे यू रिपोर्ट टू द अकेडमी योर फादर विल बी हाफ द मैन दैट ही इज। द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ इज ओवर। Hmm. वो शख्स आधा रह जाएगा। दिस इज द Hmm. प्राइस यू हैव टू पे। तुम्हें यूनिफॉर्म पहनने से कोई नहीं रोक सकता। तो मेरे बातों में निकल गया शहजाद, बट सर आई वाज वांटिंग टू फ्लाई। जब मैंने ये कहा तो एयर मार्शल रहीम खान, हु इज द चीफ ऑफ द पाकिस्तान एयर फोर्स, सेड
okay, let's make a deal. I said, gee, what? He says, you allow me to take your name off the Air Force and you report at the Rawalpindi Flying Club tomorrow. I will make sure you're a pilot. Okay. Okay. मैंने कहा डन डील, दफा करो एयरफोर्स को. एयरफोर्स में मैंने रगड़ा कर. नेक्स्ट मॉर्निंग आई रिपोर्टेड एट द फ्लाइंग क्लब एंड आई बिकेम अ पायलट. बट मैंने सारी जिंदगी फ्लाइंग की शहजाद, बट आई ऑलवेज फ्लू एज अ वॉलंटियर. मैंने लोगों को फ्लाइंग सिखाई. मैंने अमेरिका में एयर 911 के लिए फ्लाइंग की, एयर सर्च रेस्क्यू के लिए फ्लाइंग की. मैंने पूरी जिंदगी में फ्लाइंग के लिए एक आना नहीं लिया. इट वॉज जस्ट अ हॉबी, बिकॉज मेरी मुलाजमत हॉस्पिटैलिटी थी. ना मैंने टेनिस से पैसा लिया, ना मैंने टीवी से पैसा लिया, ना मैंने एयरफोर्स फ्लाइंग से पैसा लिया. बिकॉज जब तक मेरा किचन चल रहा था, मुझे किसी लोगों से या किसी अपनी हॉबी से पैसे लेने की जरूरत नहीं थी. सो दिस इज द स्टोरी ऑफ माई फ्लाइंग एंड माई टेनिस. ओके आजम भाई, बात यह है कि जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था टाइम, वो तो हो गया खत्म. लेकिन वो मैंने आपसे गुजारिश की थी, मैंने ऑफलाइन भी आपसे गुजारिश की थी कि आपने लंबे जवाब नहीं देने, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी और आपने ना मेरा आधा एजेंडा जो है वो खा लिया टाइम के अंदर. लेकिन अब मेरे आधे सवाल पड़े हुए, मैं अब आपका ज्यादा टाइम तो डिमांड नहीं कर सकता हूँ. लेकिन एक चीज, अब आपके पास दो ऑप्शन है. या तो दोबारा मेरे पास एपिसोड नंबर 2 के लिए आए और मेरे सवालों के जवाब आपने देने हैं, या फिर अल्लाह हाफिज कर लेते हैं. नहीं, लिसन, मैं तुम्हें सब लोग जो सुन रहे हैं इनके सामने कमिटमेंट देता हूँ, वी विल डू एपिसोड 2 व्हेनेवर यू वांट. बस डन हो गया. आज का प्रोग्राम खत्म करने से पहले सर, वो आज आपने ना इतना वो सेंटिमेंटल कर दिया मुझे, मैं किसी और इमोशन स्टेट में चला गया हूँ. मैं इस इमोशनल स्टेट में था नहीं, और मैं आपको ना बड़ा रिबटल भी करना था, वो मैं एपिसोड नंबर 2 में जरूर करूंगा. लेकिन टुडे बिफोर आई से गुड बाय टू यू, अल्लाह हाफिज करने से पहले मैं आपको एक गुजारिश करना चाहूंगा. वो अगस्त का महीना है, जश्न आज़ादी का. तो अब आपके पास चॉइस है. आप अभी हमें म्यूजिक वाले एलिमेंट से मुस्तफीद कर दें या एपिसोड नंबर 2 में करें. आई वॉन्ट यू टू टेल द पीपल दैट यू हैड बीन अ म्यूजिशियन. वो मैं बता दूंगा, लेकिन मेरे से खुदा के लिए कुछ बजवाना ना. मेरी इज्जत बनी हुई है सोशल मीडिया पे, मरवाना. सर वही बजवाने की तो बात करूं, तो गा के बता देते, बजवा के बता. हमने आपकी स्टोरी वर्ड्स में नहीं सुननी. तो देखो, बात ये है कि ये मेरे सामने कीबोर्ड पड़ा हुआ है. मैं अपने कीबोर्ड पे बैठ के तुम्हारे से बात कर रहा हूँ. ओके, the reason I'm sitting on my keyboard is that there's this light here that comes on the keyboard, so I point that light at me so that you get a better, clearer image of me. So in episode 2, I play a melody for everybody. Thank you very much, Azam sir, and I'm going to make my episode number 2 more productive than this one. But this one was really pleasure talking to you. I would request. I would request you to take your care, not for yourself, but for my sake. अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा. इंशाल्लाह एपिसोड 2 दोबारा मुलाकात होगी. Thank you very much and Allah Hafiz sir. Thank you. Assalamu alaikum.